Hello student, welcome back to the session. Now in this session we are going to discuss with the continuation of what we have discussed yesterday. So in the last class we have done only the basics of it. Now we are going to basically discuss in further continuation of it. See, this is a illustration number 1 where we can see that directly I can say a expression or function is given to you, and you just need to integrate between 0 to 1, and that is equal to given to you 0 whatever the value comes out. You need to decide the value of k. Okay, आपको k की वो वैल्यू निकालनी है such that this particular I can say a quadratic expression will going to give you a value 0. तो चलिए देखते हैं what will happen. As we know, like this basically become 3 times of x cube by 3 as per the basic indefinite integration knowledge we have. Then it will be 2x square by 2, and then we will be having kx. And yes, obviously 0 to 1 we are going to put as per the lower limit and the upper limit respectively, and as per given in the question, it's going to basically be 0. So when you solve it out, try to understand. It will be like, first of all, cut me these things. So when I put 1, it will be 1 plus k, and that when you do 0, it will be 0 plus 0, and obviously all thing will be 0. So finally you will get k plus 2, I can say, equal to 0. So k equal to minus 2. So it's quite obviously when you take k as minus 2, the following function, or I can say the following quadratic equation, will going to give you the value 0 when we try to integrate this between the limit 0 to 1. Fine. So this is a very basic question. Again, we have already seen this type of question earlier in our previous session also. Now let's move further. यहाँ आप देख सकते हो कि we have basically the same explanation as I've told you in the last session also. You will be having the pre-written solutions. So basically I can say we have this x cube, x square, kx, and further when we put the things, you will get k equal to minus 2. So it can be a revision factor for you as well. Otherwise you can refer in your solution. Fine. Now let's come to the illustration number 2 for today. So it's about you need to evaluate this. Fine. Try to understand this, like secant square we know tan x. Fine. Here also, like, so I can write directly कि भाई यहाँ 2 tan x आ जाएगा मेरा, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसके बाद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका मुझे पता है x की पावर 4/4 लिख सकता हूँ, और 2x. तो बड़ा सिंपल सा है, 0 से π/4 बस मुझे लिमिट्स को पुट करना है, एंड आई विल डेफिनेटली बी हैविंग माई आंसर. सो देखो भाई, जैसे आप π/4 पुट करोगे, you know tan π/4 is 1, so 2 plus I can say π/4 to the power 4. Okay, so I can put like pi to the power 4 first, and then I have 4 to the power 4, and 1 4 already is there, plus 2 into π/4. And for 0, when you see tan 0 is also 0, x power 4, sorry, 0 power 4, and this all will be 0. So I am having 0 in my, when I put my lower limit. And finally what I have is, what I can say is you have 2, and this will be like pi/2. So 2 plus pi/2 plus you will be having pi to the power 4. Okay, and just give me a second. Yes, so it will be pi to the power 4 upon 4 to the power 5. Further, like, you can simply write in this way also, or as per given in the option आप उसको convert भी कर सकते हैं. Fine. Now let's come to the pre-written solution. यहाँ पर एक मेन चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो यही है कि जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में था कि हम प्लस माइनस के बिहाव पे सेपरेट कर सकते हैं, दैट्स अ वन थिंग ओनली. तो उसके बिहाव पे जब हमने सेपरेट किया तो सीकेंट स्क्वायर का हमने अलग से इंटीग्रेशन निकाला, एक्स क्यूब का अलग से, और फॉलोइंग दिस ऑल थिंग what we got, we get 10x, and then we have put it the limit on different. Otherwise we can take whole as a function और सब पे लिमिट एक साथ भी पुट कर सकते हैं. तो फाइनली हमारा आंसर आ वही रहा है जो मैंने इनिशियली आपको बताया था. इन्होंने लास्ट में लाइक लिखा भी है, दिस इज 4 to the power 4 you are getting, pi/2 are getting, and 2, and this is obviously 1024, जो मैं चेक भी कर सकते हैं because what we got in our solution is 4 to the power 5, which is obviously your 2 to the power
10. So n to the power 10, you know, it's nothing but your 1024. So it will be 10. Just give me a second, because here it will not be visible to you. So let me write it over here. So it will be like pi to the power 4 upon 1024. Fine. So you must get this now. Now let's move to the another question. If we have, okay, so these are the two questions where you can understand the basics more well. Earlier in the previous session, we have also discussed this very clearly. Now try to understand few very basic properties regarding the definite integrals. We will try to understand few basic properties in this, and then we will see the next thing in the next lecture. So सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, that's about the change of variable. Obvious सी बात है, मेरा वेरिएबल कुछ भी हो, like let's say after doing a indefinite integration, rather I say I got t square plus t plus 2, and in terms of x I get, like suppose let's say, let me take it separately, like x square plus x plus 2. अब भाई एक बात सोचो कि अगर t की जो रेंज है, t वेरिएबल है, उसको मैं 0 से 2 ले रहा हूँ, और एक x वाला वेरिएबल है, उसको भी 0 से 2 ले रहा हूँ, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो एक नंबर आएगा. एंड नो मैटर व्हाट द वेरिएबल इज, जो आउटपुट एक नंबर आएगा वो डिपेंड करेगा, अगर एक्सप्रेशन सेम है, बस हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली भी उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू 0 2 ही पुट होनी है. तो जो यहाँ वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी सेम एज द वैल्यू विच यू गॉट इन दिस. तो वेरिएबल चेंज करने से आंसर ऑब्वियसली चेंज होगा इनडेफिनेट का, बट डेफिनेट में सिंस यू आर गेटिंग अ आंसर, सो डजंट मैटर, एक्स को टी से रिप्लेस कर दो, यू से रिप्लेस कर दो, कोई नहीं पूछने वाला, फाइनल आंसर विल बी सेम. जस्ट लाइक यू नो, लाइक साइन एक्स को आप जब इंटीग्रेट करोगे आपको माइनस कॉस एक्स मिलेगा, लेकिन साइन टी में माइनस कॉस टी मिलेगा, और यहाँ माइनस कॉस यू मिलेगा. तीनों अलग है, बट ऑब्वियसली टी यू और एक्स तीनों में वही वैल्यू पुट होने वाली है. तो फाइनल जो आंसर एक नंबर आएगा, दैट विल बी द सेम. ये बिल्कुल इसी तरह देखो, यहाँ आप देख सकते हैं एक्स इज जस्ट अ डमी वेरिएबल, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर वेरिएबल which can be t, u, z, x, y, whichever you want to take. अब देखो, this is similar to the summation. summation में भी हमने ऐसे ही किया था, no matter what, जो यहाँ से expression आएगा summation का, उसमें जब जस्ट हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं और हम एक रेंज डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 1 से 10 जाना है, तो मैटर वेरिएबल नहीं करेगा, इट्स द आंसर विच मैटर, विच विल बी सेम इन ऑल द केसेस. और वैसे भी हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज समवट वेरी सिमिलर टू द समेशन. चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपके पास फंक्शन है और आप उसको ए से भी इंटीग्रेट कर रहे हो, बाई चांस मैंने अगर उनकी लिमिट्स को इंटरचेंज करने की कोशिश की, तो आंसर सेम ही आएगा, बस एक माइनस साइन को आप बाहर ले सकते हो. तो अगर मैं सिंपल बोलूँ कि 2 से 4 मैंने अगर इंटीग्रेट करने की कोशिश करी कोई भी फंक्शन को, लेकिन मैं अगर उसी चीज़ को चेंज करता हूँ, 4 से 2 इंटीग्रेट करने की बात करता हूँ, तो एक माइनस साइन को कंसिडर करना है, अदरवाइज द आंसर विल रिमेन सेम. तो ये बात है कि इट ओनली चेंजेस इट्स साइन. ध्यान रखो, इट्स ओनली चेंजेस इट्स साइन. तो अभी इतना ही करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 3 वी विल ट्राई टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, एंड देन वी विल फॉलो अप विद द क्वेश्चन ऑफ property 1 and 2 also, including in that. So this will be little short videos through which you can gather lot of information.